In this video, you'll learn everything about AWS Auto Scaling Groups, from setup to use cases. Auto scaling is a must-know AWS feature. So let's get started. Scaling group. Auto scaling group is also commonly called as ASG, okay, a short form. Now, auto scaling group is a feature using which, depending upon certain policies which you will configure, right, it will automatically increase your instances or decrease your instances. Okay. So auto scaling group is what? Auto scaling group is a feature of AWS EC2, okay, which we see here, right? Using which you can increase the instance and decrease the instance depending upon the need. So in auto scaling group, we have something called as minimum. Okay, what is minimum? Okay, minimum is like, okay, I want minimum this much of instance, okay, available in my for my particular any application or anything. Like we took taken the example of order and all, right? So that is something minimum. Like at any condition, it should not go below this. So how many of them I am maintaining? 2. Okay. We will also try to see best practices. Let's say you have 3 availability zones, which are nothing but data centers. So you should be having 3 as minimum, and each which should be spanning in which each should be spanning in 1 availability zone. Okay. So we should be having 3 instances as minimum, and each should be spanning in 1 availability zone. Now, what is maximum? Maximum is like maximum how much it can scale to. For example, load is increasing and it will keep on adding servers. So adding servers is nothing but we call it as a scale out. Like, okay. So for example, minimum it will be 3. Okay. And the maximum it can go is 6. Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now, so this is what maximum is like. Max it can go up to this. Okay. Now the desired is like, let's say, under normal condition. Okay. Normal condition means like, let's say the policy which says under the normal condition, like let's say if the load is optimal, okay, neither too high nor too low. If it is too high, then it will apply for maximum and it will keep on scaling until and unless it satisfies the rule. Okay, but it cannot go beyond this. That is why I have kept it in red color coding. So you have to be very careful when you are deciding maximum. For example, you decided maximum as 6, and after 6 also, if the application is unhealthy, then it will not be able to scale more. Right, because you have already limited it to 6. What is desired? Desired is under normal situation. Let's say, let's make it as 4. So under normal, if the CPU and memory is average, it is neither too low nor too high, then it will be desired. Most of the time, what people do is they keep minimum and desired as same. Okay, because they want to have, lesser cost and all these things. So, but we can have different also. Okay, so auto scaling group, minimum, maximum, desired. Did we understood? सर ये मिनिमम नंबर है हाँ, go मिनिमम ahead. नंबर और मैक्सिमम नंबर है जो बाय हमारे थ्रू डिसाइड करेंगे कि ये बाय डिफॉल्ट नहीं, जो हम हमारा फिक्स डिसाइड कर दिया हमने 6 तो हम 6 से ऊपर ही जाएगा। नहीं, हम डिसाइड करेंगे कि ये मिनिमम जैसे ये हमारा साइज है, ठीक है। डिजायर्ड कैपेसिटी हमने 1 डिसाइड की, तो इसको हम 2 बना देंगे, और मिनिमम ओके भी हमें मान लो 2 ही रखते हैं, और मैक्सिमम 3 की जगह हम 10 रख सकते हैं। तो अब क्या होगा, पहले ये कितना भी हिट हो वो 3 पे जाकर लिमिट हो जाता। अब क्या कि हमने 10 कर दिया, अब क्या होगा, 7 और नए इंस्टेंस बनाएगा ये हम फिक्स ओके करते हैं। दिस समथिंग यू फिक्स इट। ओके, प्रेडिक्टिव स्केलिंग भी एक फीचर है। हाँ, हमारा डिजायर्ड वाला लेता है या मिनिमम वाला लेता है जब स्पिन करते हैं? तो जब स्पिन करते हैं तो वो डिजायर्ड पे जाता है, क्योंकि वो आपको ऑप्टिमल समझता है, ठीक है। बट मान लो आपका डिजायर्ड में 5 रखा आपने, और आपका है कि अगर सीपीयू 40 के नीचे है तो डाउन स्केल करते रहो, मतलब स्केल इन करते रहो, ठीक है, सर्वर्स को निकालते रहो, तब वो मिनिमम पे आ जाएगा। जब आपका स्पिन अप होता है तो वो डिजायर्ड से स्पिन अप होता है। ओके, ठीक है, ओके।
minimum, maximum, desired पे any question? ऑल क्लियर? ओके, स्केल इन स्केल आउट, ये दोनों टर्म समझते हैं अब, ठीक है। हम लोग एक एक करके टर्म समझेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे। स्केल इन क्या होता है कि जब जैसे जैसे मैक्सिमम हम कितना जाएंगे एज पर दिस लॉजिक, 6 जाएंगे, और जब मिनिमम का रिक्वेस्ट आएगा जब 3 जाएंगे, तो हमारे 3 नोड क्या होंगे, 3 नोड जो हमारे निकल जाएंगे, राइट। तो स्केल इन में क्या होता है कि आप स्केल को इनसाइड कर रहे हो, राइट, बट मींस रिड्यूसिंग। स्केल आउट मींस यू आर इंक्रीजिंग, simple terminology. Okay, now let's talk about policies. Okay, what is a policy? Okay, so you define a policy. You guys can see this policy. दिख रहा है क्या policy? Yes. आप देखो यहाँ पे policy है, right, कि टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी का नाम है, और एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन, अगर एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन 40 रहेगा, ठीक है, तब जो है ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर गया 40 के ऊपर, ठीक है। इफ इट गोज बियॉन्ड 40 और बियॉन्ड वट एवर परसेंटेज यू सेलेक्ट, इट विल स्केल आउट। टिल व्हाट पॉइंट इट विल स्केल आउट? maximum. And till what point it will scale in? If it is lesser, right, if it is lesser, then till what point it will scale in? Till minimum. Till minimum. Right. So this is the policy. Okay. So auto scaling group, minimum, maximum, desired, scale in, scale out policy. Thanks for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and share it with your friends. Got questions or suggestions? Drop them in the comments. We'd love to hear from you. See you in the next one.